the number of photons emitted out per unit area per unit time is defined as an intensity, and the number of photons depends upon the particular level is populated and the electrons are de-excited from this particular level. So now if we look here, this is the atom, which is the zinc atom, and if we 202 here, what we were discussing in 202 wavelength, the intensity is much less as compared to 255. So if we look at the 255 intensity is higher and 202 has a lower intensity. So this intensity is defined as the number of photons. इसका मतलब ये है कि ये जो लेवल है 255, इसके जो एटम्स हैं वो ज्यादा पॉपुलेटेड है, मींस दिस लेवल इज मच पॉपुलेटेड, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ photons emitted through this level is maximum. Empirically, through empirical formula, if we look here, the intensity of the transition line is defined as or is directly proportional to the hc, which is the constant, Planck's constant, and c, and inversely proportional to the wavelength lambda g. G is the statistical weight, A is the transition probability, N is the number of atoms present, and Q is defined as the partition function exponential minus Ej over Kt. Ej is the energy of that level over Kt. K is the Boltzmann constant and T is the temperature. इसका मतलब है कि this intensity of the transition line, intensity of the photon from that particular level, depending upon these parameters. This is the empirical formula. This is the formula by which you can calculate what would be the possible intensity of the transition lines when the atom is de-excited from higher level to the lower level. अब यहाँ पे अगर आप ये देखें कि ये हमारे पास फार्मूला है इंटेंसिटी में, इसमें H is constant, C is constant, lambda is the wavelength, and everything is constant. This A is known as the probability, or we call it as it is a reciprocal of the lifetime of the level. So आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जब एक्साइट होता है तो उसके एक्साइटेशन स्टेट में एक लाइफ टाइम होता है, जो अप्रोक्सीमेट आप कहते हैं कि इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁸ सेकंड, and the reciprocal of the lifetime is known as a transition probability. This A is known as a transition probability or Einstein coefficient of the upper level, or we call it as a transition probability, and this transition probability is the reciprocal of the lifetime of the electron in the excited state. So it is the reciprocal of the lifetime of the electron in the excited state. So this constant is the reciprocal of the lifetime in the excited state. Okay. So here, if we look into the next slide, this is the energy this is the spectrum of the zinc. This is the ionic spectrum of the zinc. This is how the levels are distributed. Okay, this level has a maximum photon as compared to this level. This level is much more populated as compared to this level. Why? Because the transition probability, energy of the excited state is different. If we look here, this is the de-excitation channel. For example, अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक की जो कॉम्बिनेशन है which is the 4s2, electronic combination of the zinc is 4s2, which is its electronic configuration, and its term value is 1s0. The electron is excited into the higher state, 4s electron is excited into the 4p. So the configuration becomes 4s into 4p because one of the s electron is excited into the p. So 4s 4p. So these are the levels of 4s 4p, which is equal to 1p1 3p2 0 1 2.
or it may be possible that one of the s electron is excited into the 5s. So the combination is 4s 5s. So its term value is 3s1. This is also possible that the s2 electron is excited into the 4d electron. So one of the electron is the 4s and other electron is the 4d electron. So one of the electron is excited over there. So these are the energies which are the energies values of a particular level. And this energy level is taken out from the data book. This is particularly for the zinc. This I have posted for your understanding only. So here अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे इसकी एनर्जी दी हुई है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड इन सेंटीमीटर इनवर्स. अब कौन सा आइटम कितना पॉपुलेटेड है, दिस इज टोटली स्टैटिस्टिकल बिहेवियर, दिस इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, और एज अ रिजल्टेंट आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलते हैं. How many photons are emitted out in that particular level? This is totally a statistical behavior and this is totally depend upon the spectroscopic values of that particular level. अब उस पे हम आते हैं. यहां पे अगर आप ये देखें, यह what are the intensity rules of the transition lines. अब transition lines emit हो रही है. फर्ज कर लेते हैं कि the transition line is stronger. कि वो कब stronger होती है, इसका मतलब वो dominant कब होती है, when the delta J and delta L changes in the same way. अगर कोई भी ट्रांजिशन लाइन है उसका डेल्टा जे और डेल्टा एल सेम वे पे चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर डेल्टा जे +1 है और डेल्टा एल भी +1 है तो उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. अगर डेल्टा जे +1 है और डेल्टा एल -1 है तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी. इसका मतलब है कि दीज बोथ थिंग्स डेल्टा एल एंड डेल्टा जे दिस मस्ट बी चेंजेस इन द सेम वे. So here the transition line is stronger. It means this is the stronger line if delta L and delta J changes in the same way. If two or more than two transition lines in which delta J and delta L changes in the same way, then the higher J value will have the maximum intensity. अब अगर फर्ज कर लेते हैं दो ऐसी लाइनें हैं कि जिसमें डेल्टा एल और डेल्टा जे सेम तरीके से चेंज हो रहा है, तो फिर उन दोनों में सबसे ज्यादा जे वैल्यू किसकी होगी, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी, तो जिसका जे वैल्यू हायर होगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी. दिस इज द फर्स्ट रूल. द सेकंड रूल इज द लाइन इज फेंट व्हिच अराइजेस ड्यू टू द ट्रांजिशन which J and L does not change in the same way. अब जिसमें J, डेल्टा J और डेल्टा L, ये जो डेल्टा J और डेल्टा L है ये चेंज हो रहे हैं सेम वे पे नहीं. In which delta J and delta L does not change in the same way, ये सेम वे पे चेंज नहीं हो रहे हैं, तो as a resultant that transition line is faint, वो आपकी faint है. तीसरा रूल क्या है, द लाइन विच अराइजेस ड्यू टू द ट्रांजिशन फॉर विच एल डिक्रीजेस इज स्ट्रॉन्गर देन फॉर विच एल इंक्रीजेस. अब ट्रांजिशन लाइन है फर्ज कर लेते हैं जिसमें एल डिक्रीज हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू द ट्रांजिशन लाइन इन विच एल इंक्रीजेस. ये इसके हम एग्जांपल्स पे आते हैं. चौथा रूल जो है वो ये है कि the spectral line resulting from the transition, the spectral line which is the resulting from the transition line in which L and J does changes in the opposite way. L and J changes in the opposite way. अब जिसमें L और J जो है या डेल्टा J और डेल्टा L changes in the opposite way is not allowed. इसका मतलब है कि अगर किसी में डेल्टा J +1 हो रहा है और डेल्टा L -1 हो रहा है तो वो अलाउड नहीं है, या डेल्टा J -1 हो रहा है और डेल्टा L +1 हो रहा है तो वो अलाउड नहीं है. These are the four rules which we call it as the intensity rules. अब यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांजिशन लाइंस है, ठीक है. यहाँ से अगर आप ये देखें कि ये जो आपके पास लेवल्स हैं इसमें हम करके आए हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैन डी एक्साइट फ्रॉम हायर लेवल्स टू द लोअर लेवल.
तो जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आ जाता है, यहां से अगर आप ये देखें ये कि इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आ जाता है, तो इसमें अगर आप ये देखें कि ये ट्रांजिशन है आपकी 2p 1/2 से 2s 1/2 तक, ये 2p है, दिस इज 2p, 2p से इलेक्ट्रॉन 2s में आ रहा है, दिस इज हाइड्रोजन जो हम पहले करके आए। अब 2p से 2s में आ रहा है, यहाँ पे आपके पास दो लाइनें मिल रही हैं, ठीक है, एक 2p दूसरा 2s। अब इसमें जो है कौन सी इंटेंसिटी, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी? फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये दो लाइनें, इन दो लाइनों में इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? ये दो लाइनें, एक लाइन ये है, क्लियर, दो रेड लाइंस जो हम बात कर रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी ज्यादा किसकी होगी? हम इसको देखते हैं, ये जो हमारे पास रूल्स है। अब यहाँ पे इसी तरीके से एस से पी में आता है, इसी तरीके से डी से पी में आता है। इसको देखने के लिए हम इसको इस तरह करते हैं कि आपके पास ये सीरीज है, हमारे पास जो सीरीज है वो चार किस्म की होती है। एक है प्रिंसिपल सीरीज, दूसरी है शार्प सीरीज, तीसरी है डिफ्यूज सीरीज, चौथी है फंडामेंटल सीरीज। प्रिंसिपल सीरीज किसको कहते हैं कि जो 2p से 2s में आए, p to s series is known as a principal series, which is 2p 1/2 से 2s 1/2 में आए, या 2p 3/2 से 2s 1/2 है, तो this series is known as principal series। दूसरी सीरीज है शार्प सीरीज। अब शार्प सीरीज में क्या है कि इट वेरीज फ्रॉम एस टू पी, यहाँ पे पी से एस में, यहां से एस से पी में, बोथ आर पॉसिबल, क्योंकि दोनों में अगर आप ये देखें कि डेल्टा एल +-1 होता है, तो एस से पी में भी आ सकता है, पी से एस में भी आ सकता है। तो दिस कॉल्ड शार्प सीरीज। एस टू पी मींस शार्प, P to S means principal. P indicates means from P to S. S indicates from S to P. This is the way to understand. तीसरी चीज है डिफ्यूज सीरीज। डिफ्यूज सीरीज का मतलब है कि this varies from D to P. अब D to P में क्या हो सकता है? D 1/2 भी हो सकता है, D 3/2 भी हो सकता है, D 5/2 भी हो सकता है, एक्सेट्रा। So 3/2 से 1/2 में भी आ सकता है, 3/2 से 3/2 में भी आ सकता है, एंड 1/2 से 1/2 में भी आ सकता है। तो यहाँ पे फ्रॉम D to P दिस सीरीज इज नोन एज अ डिफ्यूज सीरीज। चौथी सीरीज है फंडामेंटल सीरीज। अब यहाँ पे देखिए फंडामेंटल सीरीज जो है विच इज फ्रॉम F to D, विच इज फ्रॉम F to D। ये हम पहले से करके आए हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जाएगा, जब हम हाइड्रोजन एटम की ट्रांजिशन लाइंस को देख रहे थे कि हाउ द इलेक्ट्रॉन is transit from higher level to the lower level to follow the dipole transition selection rules. If it does not follow the rules, that transition is not possible. So now we see that what are the transition rules here. The selection rules for the transition is, you know that the change in the value of L must be equal to +-1. This change in value of L must be equal to +-1. So delta L is +-1. The change in value of J is 0 or +-1. So delta J must be equal to 0 or +-1. The third is if in the presence of the magnetic field. तीसरा इसमें है delta S is equal to 0. अब अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है और in the presence of the magnetic field, तो delta ML must be equal to 0 or +-1. ये चेंज होगा, और delta mj which is equal to 0 or +-1. So these are the selection rules for the dipole transition. So now if we look here, principal series, this is the series now. This is the principal series which is from 2p to 2s के p से, दिस इज p मींस n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के p से इलेक्ट्रॉन आ रहा है s में, s कौन सा? n इज इक्वल टू 1 मींस इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 to n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 2 में p में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें दो लेवल्स हैं, एक 2p 1/2, दूसरा 2p 3/2। अब अगर 2p 1/2 से 2s 1/2 में भी आ सकता है,
2p3/2 से 2s1/2 में भी आ सकता है। अगर आप ये देखें ऊपर वाली को पहले, तो इसमें जो डेल्टा एल है वो -1 है, क्योंकि दिस इज एस, फॉर एस इट इज 0 एंड दिस इज पी, 0 minus 1 is equal to -1. Similarly, we look at the delta j. Here the j is equal to 1/2, here the j is equal to 1/2. So this 1/2 gives you the 0. So delta L is equal to -1, delta j is equal to 0. The second level is 2p3/2 to 2s1/2 here. So now if we look here, S means 0, P means 1, 0 minus 1 means -1. So delta L is equal to -1 here. And this delta S, which is equal delta J, which is equal to 1/2 minus 3/2. 1/2 minus 3/2 is again -1/2. So here in this particular level it is -1, -1. So delta L and delta J changes in the same way. So between these two levels, the lower level is strongest, in which the delta L and delta J is changes in the same way. तो यहाँ पे -1 वाली जो level है, which is stronger as compared to the -10 level. सिमिलरली अगर शॉर्ट सीरीज की तरफ आते हैं अगर आप, तो शॉर्ट सीरीज में भी यही है, 2s1/2, 2p1/2, 2s1/2, 2p3/2. अगर इसमें भी अगर आप ये देखें, ये p है, ये s है. p का मतलब ये है कि l is equal to 1, s का मतलब है l is equal to 0. So 1 minus 0 gives you +1. So here for both levels delta l is equal to +1. Here delta j for the upper here, okay, this is 1/2, this is 1/2. 1/2 minus 1/2 gives you the 0 here. This is 3/2, 3/2 minus 1/2 gives you the +1. So here the lower level, this one, +1, in which the delta j and delta L both are changes in the same way. So this level is stronger as compared to the upper level. The third diffusion series, if you look here, the delta L and delta J both are changes in the same way, and this is -1, this is -1. So now among these two, here we have a two levels, -1, -1. Here -1, -1. अब यहाँ पे दो लेवल्स हैं, 2D 1/2 to 2P 1/2, और दूसरी जो है 2D 3/2 to 2P 3/2. इन दोनों लेवल्स में फर्स्ट और थ्री में आपका जो डेल्टा एल और डेल्टा जे है वो सेम वे में चेंज हो रहा है. तो बिटवीन दीज टू विच इज द स्ट्रॉन्गर, इन दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन सी होगी? इन दोनों में कि -1/2, -1/2, हियर -1/2, -1/2. तो इसमें रूल नंबर सेकंड अप्लाई करते हैं कि हायर द जे वैल्यू विल हैव द मैक्सिमम इंटेंसिटी. तो इसका जो हायर जे वैल्यू है 3/2 है, इसका 1/2 है. तो दिस लोअर विच इज द हायर जे वैल्यू विल हैव द मैक्सिमम एनर्जी. So this line is strongest. ये जो लोअर वाली है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है. क्लियर? इसी तरीके से अगर हम आते हैं फंडामेंटल सीरीज पे, तो फंडामेंटल सीरीज पे भी यही कुछ है कि 5/2 और 7/2 इनका डेल्टा एल और डेल्टा जे जो है सेम वे में चेंज हो रहा है. दिस इज -1, -1, -1. क्लियर? बिकॉज this is 7/2, this is 5/2. So the 7/2 is higher value, so therefore the intensity of that transition line is stronger as compared to the 2f 5/2. So this is the way to calculate the intensity. So here I am stopping sharing because the time is almost completed. So here